No questions? Okay, so I have given you a homework for you. As Sandhya said, difference between morale and motivation. So answer from your side. Yes, ma'am. Yes, Ankit, Yes, ma'am. please. Ma'am, only difference Somebody ना have motivation. yes, 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 yes. Okay, ma'am. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है मैम, और मोरल जो होता है मैम वो ग्रुप बिहेवियर होता है। और ये जो है मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है मैम, ये नैरो कंसेप्ट होता है, और मोरल जो है वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। और मोरल के अंदर जो है मैम वो एक कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पीपल पुल टुगेदर persistently and consistently in pursuit of a common purpose के लिए वो लोग एक साथ काम करते हैं। और मोटिवेशन में जो है मैम उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मैम, इस पे पनिशमेंट भी दिया जाता है मोटिवेशन के अंदर, लेकिन मोरल के अंदर जो है मैम ये इसमें फेवरेबल अप्रोच होता है। और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट की बात करें मैम, तो मोटिवेशन के अंदर मैम मोर डायरेक्ट अटेंशन होता है, और मोरल के अंदर मैम पीपल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का ये इनडायरेक्टली मेथड है मोरल। Okay. यस मैम। Anything else? From where you have studied all these? और मोरल को मैम इन्फ्लुएंस करने का मैम कुछ फैक्टर होता है, तो फिलहाल आप तो मैम बोली थी सिर्फ डिफरेंस पढ़ के आने की डिफरेंस। Okay, ठीक है. वैसे we have discussed difference between morale and motivation in last session as well. Okay, we have discussed about the concept. The concept was just if you talk about if we talk in a very simple way, morale was your inner instinct or your inner feeling, and when we talk about motivation, basically it is a kind of external force. Okay, that is exerting towards you. A way of ठीक है? describing how people feel about their jobs. Yes, yes, you can say. Okay, Yes, ma'am. so we should move ahead. We have मैम completed. आई हैव Yes. वन Yes, क्वेश्चन ma'am. मैम। Okay, tell me. मैम मोरल्स को लेकर के मैम, मैम वेयर डज Hmm. इट रिसाइड्स मैम? What? वेयर डज इट रिसाइड्स मोरल? Morale. See, as we have discussed in our last session, that when we talk about morale, it is your internal feelings. So obviously, it resides within you. Until and unless you are, your morale is boosted. कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, you are not going to be motivated towards anything. ठीक है? ओके। ठीक है. मोटिवेशन की ओके। जब हम बात करें तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. मोरल की जब हम बात करें दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स दैट रिसाइड्स विद इन यू. So if you ओके। want to do something better, before somebody tries to motivate you, उसके पहले you need to boost up your morale. Then only that external force is going to work on you. अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये काम नहीं करना है, कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, will you do so? नो मैम। Definitely you are नो not मैम, going to कोई do फर्क that. नहीं पड़ेगा। Yes, definitely. इसीलिए whenever if you are trying to do something better, your confidence must be at that level that if any external force is being exerted to you, then you are able to do that work in a very very effective way. ठीक है? यस मैम। Okay, so shall we move ahead? यस मैम। I'm starting sharing my screen. ओके मैम। ठीक है? We have completed our objective part. Today we will discuss scope of HRM. ठीक है? See, scope of HRM is very wide, we can say, and we will discuss it in three aspects. The first one is my screen is visible to all of you. Yes, यस ma'am. Yes, मैम। ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so we will discuss scope of HRM in three aspects. You can see first aspect will be our personnel management, the second aspect will be employee welfare, and the third aspect will be industrial relation. So when we talk about personnel management, you know, it is a kind of thing in which personnel are managed in a different ways. And you know, each and every personnel are different working in an organization. Therefore, the handling technique of each and every personnel will also be different, right?
right? So it depends upon your skill how you are going to manage your personnel. If I ask what is personnel, आपको पता है personnel मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. क्या? That is the administrative which used to hire an employee. You can say the person who is working in the organization. Those who Okay. are working for Employee. the organization. Yes. Employee. Yes. Yes. So when we talk about personnel management, definitely we are talking about managing the personnel who are working in the organization at various levels. ठीक है? And when we talk about managing personnel, we will start right from the entry of an employee till the exit of an employee. ठीक है? जब हम एंट्री की बात करते हैं एम्प्लॉय की एग्जिट की, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरिंग, about the concept of recruitment and selection. When we are talking about the exit of an employee, means the employee is leaving the organization. Okay, so ये पूरी जो जर्नी है ना, how you are going, नहीं आ रहा। अभी right now it's clear, right? Clear, you are getting my voice? Yes, ma'am. Yes. Okay. So what I told, did you listen? When we talk about managing the personnel, we are trying to manage the personnel right from the entry of an employee to the exit of an employee within an organization. ठीक है? In इस पूरी journey में, how you are going to manage, there are different kind of terms that you have to handle. Like you have to talk about the planning of the manpower, how much manpower you require, and after that you will go for the hiring process. Once you hire the personnel, definitely you will go for the induction, you will go for training and development, and following by this performance appraisal. Okay, compensation part, all these things you have to manage. Okay. Two terms are also there, layoff and retrenchment. That is related to the, you can say, the reduction of the employee. If you have surplus employees in your organization, generally organization go for this concept, layoff and retrenchment. Are you aware of these terms, layoff and retrenchment? Any one of you? किसी को भी नहीं पता है layoff और retrenchment के बीच में मतलब क्या होता है? मैम लेऑफ में तो एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दिया। छुट्टी क्या? What do you mean by छुट्टी? You are talking about leave? कुछ हाँ? मैम कुछ दिनों के लिए लेऑफ पे भेज दिया जाता है ना मैम। लेऑफ पे भेज दिया जाता है मतलब क्या? अच्छा, retrenchment मतलब भी नहीं पता है? Partially you are right, whatever you are saying, but needs to add something more. अच्छा, छटनी वर्ड सुना है जिसको छटनी? खेत में जो छटनी होता है मैम। क्या मतलब? Yes, ma'am. किस सुना है ना? When I am talking about retrenchment, its Hindi meaning is छटनी. हटाना मैम। नहीं सुना है? Okay. हटाना मैम क्या? Yes, exactly. अलग It's करना। हटाना. See, as I मतलब छाट दिया जाता है जैसे मैम, सही गलत मैम। when one by one. चावल और खुद मैम भी काम पर से हटा देना मैम। हाँ What? हटा देना मैम, काम पर से हटा देना। अगर वो हाँ, exactly. सही तरीके से काम नहीं करे तो मैम काम से उसको निकाल देना मैम, वो हुआ layoff मैम। Yes. See, it is something like that, but it is not always negative. अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसको हटा दे रहे हो, okay, it's fine, but in every situation same thing doesn't happen. ठीक है? Situation may vary when we talk about layoff and retrenchment. Retrenchment, yes, when we have surplus employees in our organization, generally we go for layoff and retrenchment. ठीक है? When we talk about retrenchment, it is permanent, you can say, separation of employee from any organization. आप permanently उस employee को अपने organization से हटा देते हो. ठीक है? When we talk about layoff, it is for a certain time period. ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है. ओके मैम जैसे इस पैंडेमिक में हो रहा है मैम अभी. Yes, exactly. This is one of the example. This pandemic, you can see a lot of retrenchment in almost all the companies all over the world. ठीक है?
So in this particular situation, you can see those who are well performers in the organization, they are also being retrenched from their jobs. It's not like that कि they are not performing. वो अच्छा perform कर रहे हैं, but still because company have not lot of projects, not a lot of work, that's why they are trying to cut short their employees in the organization, because their paying capacity is being reduced. They are not in the position to pay their employees. That's why they are being retrenched. Okay, clear है? Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Clear. आगे बढ़े. जी Ma'am, मैम. ma'am, See, next one is, हाँ, yes, ask. मैम एज मैम जैसा आप बोलिए अभी कि मैम जैसे टेम्पररी पीरियड के लिए होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा और वो सेटिस्फाई नहीं है उसके काम से, तो मैम निकाल दिया जाता है उसको. तो मैम तो जब निकाला जाता है उसको, तो मैम क्या वो कोई लेटर साइन करता है क्या, जैसे डेसिग्नेशन लेटर हो गया, जैसे मैम वो कुछ प्रोसेस होगा ना कि वो कैसे निकलेगा उस काम से मैम. तो Okay, yes. ये बट नहीं समझ आया हमको. हाँ, ठीक है. I'll explain it to you. What, Astha? You are Astha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Astha. I'll make you explain. Just a minute. Okay. When we are talking about layoff, I said that it is not ma'am. retrenchment. It is just temporary, you can say, separation of employee from any organization. Yes, ma'am. इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा है तब उसको निकाल दिया जाता है. ठीक है, इसमें ऐसा होता है ड्यू टू एनी अदर रीजन, like I said, if the paying capacity of the employer is not up to that mark and the organization is not able to continue with such number of employees, in that case what they try to do for a certain period of time, they separate the employee, and once they regain their strength in terms of their paying capacity, again they call back that particular employee. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. क्लियर है? Yes, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको कंपनी निकाल देती है और फिर से ऐसा थोड़ी होता है कि फिर से आप परफॉर्म करने लगो तो कंपनी आपको वापस ले लेती है. ठीक है ना? बट जनरली यू कैन नॉट सी. मतलब मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ कि मैम निकाल तो देता है काम से उसको, जैसे वो सही तरीके से उसको काम दिया गया वो नहीं किया सही तरीके, तो मैम उसको निकाल दिया गया. लेकिन मैम मतलब कुछ होता हो ना कि मैम ये कोई लेटर उसको साइन करना होता होगा, लीव लेटर, रेसिग्नेशन लेटर, तो मैम ये प्रोसेस होता है क्या? दैट इज यस, ऑल दीस आर यस. ये नहीं समझ आया हमको. ये सारी पॉलिसीज होती हैं जो कि एचआरएम में डिफाइंड होती हैं. हमने जब अभी एचआरएम का डेफिनेशन पढ़ा था तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेवरल पॉलिसीज, ऑल द पॉलिसीज दैट आर फ्रेम्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट. ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये सारी पॉलिसीज जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो ईच एंड एवरी पॉलिसी यू कैन फाइंड इन द सर्विस रूल बुक. ठीक है? एंड टर्म्स एंड कंडीशन मैम. Yes, terms and condition, and that particular policy varies from company to company. ये एक नहीं होता है सारे ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So shall we move to our next slide? Yes. See, our next scope is employee welfare. We have talked a lot about employee welfare. If you are working in any organization, there are several kinds of welfare facilities that are being provided to the employees. Okay, a list of the facilities you can see in your slides. Okay, where if you are working somewhere, what kind of safety and security is being provided to you? Is there the availability of any kind of welfare funds at your organization or not? Proper cleanliness, proper hygiene, proper ventilation, all these things are maintained or not. This is one of the major scope of HRA, to maintain the welfare facilities for its employees in the organization. ठीक है? ये हमारा दूसरा स्कोप होता है HRM का. You can see the list that is mentioned in the slides. Okay. Ma'am, what is the meaning of amenities? Hello. Yes, ma'am. What is the meaning of amenities? Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं पूछ रहा what is the meaning of amenity? Amenities, ma'am. Amenities. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Network issue. Hello.
Yes, ma'am. Hello. Wait a minute. Hello. Okay, I think there is some problem. We'll move to second slide. We'll move to our next slide. Let's talk about our third scope, that is industrial relation. I have already told you about the industrial relation, what actually industrial relation means. I have told you. Hello, am I not audible? Amenities का मीनिंग पूछ रहा था मैम. मैम फैसिलिटी होता है ना. Hello. मैम आप आगे पढ़ाइए मैम स्लाइड. आवाज आ रहा. I cannot listen you one. Voice is Ma'am. correct. Yes, ma'am. आपकी voice clear है. So shall I proceed? May I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any question, just have your question with you. I'll answer it. Okay. Let me finish it. Or you can write, or you can question, see, or you can write your question through chat box. Okay, I'll make it clear to you. Okay, ma'am. So फिलहाल आगे बढ़ते हैं to our third scope of HRM. This is industrial relation. I have already told you about industrial relation, what actually it means. In this particular context, we are just trying to maintain a good relationship between the parties that are existing within the industry. I have also told you about what are the parties that are in the industry, in industrial terms. ठीक है? कौन-कौन सी parties होती है? I have told you about that. Yes, ma'am. Which are the parties? Employer and employee. Okay. How many parties are there within any industry? मैम 3 होते हैं. Employee and कौन-कौन? employee, employers and government भी हो सकते हैं मैम. Okay. So what is the? Can you tell me what is the role of the government? Yes, ma'am. जो मतलब yes. मैम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, जो उसको फॉलो करना होता है. जैसे कि मैम टैक्सेशन पॉलिसी भी हो सकता है. Okay. Anything else? मैम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का इसमें रहता है मैम. मैम वो सोसाइटी को कैसे वेलफेयर पहुंचा सकता है, उसके लिए भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है गवर्नमेंट. इन्वेस्टमेंट का भी रेगुलेशन रहता है मैम, कहाँ तक हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. Okay, very good. When we talk about industrial relation, yes, these are the 3 parties that are involved in maintaining in the industry, and it's the responsibility of each and every party to maintain the good relationship within the industry. And yes, when we talk about the role of government is not directly government directly don't intervene into the industry. Okay, indirectly it is there is the intervention of government, and you can see government may intervene in the form of different kind of rules, regulations and legislations that they are framing. Okay, and obviously that is for to save the employees from the exploitation of the employers. Okay, so basically this is the third scope of HRM. Okay, I can see somebody have asked the question, what's the meaning of amenities? Okay, but see, when we talk about amenities, it is something that makes our employee comfortable at the workplace. ठीक है, मतलब जब वो उस तरह की जरूरी चीजें जो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यू आर गेटिंग ट्रबल विद समथिंग, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेक यू कंफर्टेबल एट योर वर्क प्लेस. ठीक है, तो उस तरह का अरेंजमेंट करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर. ठीक है अंकित? Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. Okay, ma'am. You were having the connection problem? No, ma'am. Okay. ठीक है, now it's clear. Shall we move Yes, ahead? ma'am. Yes, Okay. ma'am. Coming to our next slide, that is challenges of HR manager. This is the last slide of this introduction of HRM part 1. So very quickly, we'll discuss the challenges of HR manager that they have to focus when they are in the organization. We have discussed about the various challenges of HR manager in our previous sessions also, in between the sessions also. We have just put together, and right now we will discuss one by one. First is managing people.
You know that this is one of the basic challenge for any HR manager, how to manage people within the organization. Okay, and not only people having different kind of attitude, different kind of behavior, everything different. They are coming from different culture, different background. So they are coming at the same workplace, and then it becomes the responsibility of the HR manager to manage them. So you can just assume how difficult it would be. ठीक है ना? आप लोग जब क्लास में आते हो क्लास करने, when we used to take the classes, it really becomes difficult for us to manage you all. ठीक है ना? होता है ना difficult? Yes, ma'am. तो धीरे धीरे as the time passes, we tries to understand you, and then it becomes normal, you can say normal way. When I understand you, you all are in the both of us are in understanding position, and the communication between us increases, and then it becomes a good workplace to work. ठीक है? For both the parties. Second is motivating the workforce. Yes, we have discussed about this point also, motivating the workforce. Until and unless an HR manager is able to understand his employees in the organization, he will not be able to motivate the entire workforce. Okay? Because the way you are dealing with one employee might not be suitable for the other employee. ठीक है? अब जिस तरीके से किसी एक एम्प्लॉय को डील कर रहे हो उसको मोटिवेट करने में, जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज जो है वो दूसरे एम्प्लॉय अभी उससे मोटिवेट हो जाए. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय, what actually he is thinking, what attitude he has having. Then only you can deal with in a very effective way. Clear hai? Third is competency development. When we talk about competency development, the HR manager must try to find out the competency level of all the employees. Okay, suppose there are several employees in your organization. Every employee have different set of skills and different set of abilities, as you know. So you have to identify that which employee can handle what, and in which sector which employees can do their best, and accordingly you need to develop their competency level. Okay? Next is bridging the gap between demand and supply. You know, one of the major you can say the function of human resource management is hiring. Okay? Ma'am, what do you mean competition level? देखो competency, हाँ बोलो. Third option, ma'am. Third option is competency development. Yes, ma'am. Didn't get it? No, ma'am. Okay, anybody who understand can make him understand? No, ma'am. इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया? Ma'am, competency means knowing the abilities of. Yes. मैम कम से कम मतलब हुआ कि मैम मतलब एक जो एम्प्लॉय है वो उसके पास कितना एबिलिटी है वो काम करने का, मतलब Yes. on the basis of his knowledge, ability, skill, he select the employee to do that particular work. That only is Yes. competence. Yes. See, sometimes what happens, you have the ability to do something, okay, but you are not in the position to identify your talent and your abilities. ठीक है, ऐसा होता है ना. बट जो सामने वाला आपका मैनेजर है ना, he is very intelligent and he has identified that what talent you possess. Okay, and once he identifies your talents and skill, accordingly he tries to develop your abilities and talents through various kind of training programs, या फिर कुछ किसी और भी तरीके से वो आपकी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करेगा, आपकी जो एबिलिटीज है आपके पास में उसको ऊपर तक लेके जाएगा, so that you may have a good position in the organization, as well as you can give your good contribution in increasing the productivity of the organization. Right? Yes, ma'am. Who asked this question? Competency किसको समझ में नहीं आया था? प्रेमजीत कुमार. मुझे मैम. Okay. अभी समझ में आया प्रेमजीत? Yes, ma'am. Just you can say the skills or abilities that you pose.
ठीक है, आपको वो सिर्फ होने से नहीं होता है, इट नीड्स टू बी डेवलप। तभी आप, जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे और उसको शार्पन नहीं किया जाएगा, यू कैन नॉट गिव योर बेस्ट इन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो चैलेंज होता है ना मैनेजर के लिए, दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू आइडेंटिफाई द टैलेंट्स दैट एग्जिस्ट इन हिज वर्कफोर्स, within his workforce, and accordingly they need to sharpen the abilities or competencies of the workforce so that they can give their valuable contribution to the organization. Okay, now Yes, coming ma'am. to next is bridging the gap between demand and supply. Now, what is you know about demand and supply? I hope you have studied in economics what is demand and what is supply. ठीक है ना, मुझे नहीं पता है डिमांड और सप्लाई क्या होता है। इफ यू कैन एक्सप्लेन मी। मैम, सप्लाई मींस producing the goods from one location to another different countries मैम। अगेन रिपीट प्रेरणा। मैम, सप्लाई का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह मैम सामान को पहुंचाना, वो सप्लाई हुआ मैम। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई। मैम एचआर मैनेजर का जॉब होता है तो ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मींस हमारा मार्केट में जितना डिमांड है उस हिसाब से हमारा सप्लाई होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बट प्रेरणा, यस मैम, प्रेरणा, you are talking about demand and supply of the products, ठीक है? Yes ma'am. Yes, but here we are dealing with HRM, so we will deal with employee or we will deal with human resources, not with product, because once we start dealing with products, we go into marketing sector. Yes ma'am. ठीक है? So now tell me about demand and supply. In what context here we are talking about demand and supply? Ma'am, repeat. इस context में, if I ask you in context of HRM, ठीक है, we are talking about demand and supply. वो किसका demand and supply की बात कर रहे हैं हम? मैम, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लेस पे कोई जैसे मैनेजर का पोस्ट है, वो प्लेस खाली है, तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वहाँ पे डिमांड किया जाता है कि यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए जो एप्लीकेबल है वो एचआरएम डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हें डिमांड किया जाता है, तो एचआरएम उनको लाते हैं उस प्लेस पे। यस मैम, इस प्रोसेस को डिमांड कहते हैं क्योंकि वहाँ पे मैनेजर की जरूरत है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, yes ma'am, यहाँ एचआरएम में okay, you are very much true whatever you are speaking. तो यहाँ पे हम एक चीज की डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं प्रेम जी। ह्यूमन HRM we can say that मैम ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी का जरूरत पड़ता है जो सही तरीके से काम करे। एक ऐसा आदमी का नीड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कोई काम दिया गया तो टाइम पे कर दिया, फुलफिल कर दिया उसके डिमांड। तो मैम ये डिमांड हो सकता है, डिमांड ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय मैम हो सकता है इसमें। डिमांड ऑफ एम्प्लॉय, यस, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। यही हो सकता है, नहीं यही है। एंड प्रेमजीत वाज आल्सो सेइंग दिस। यस, यू वर राइट। मतलब काम मैम टाइम पे पूरा वो आदमी कर दे जो उसको दिया गया है, तो मैम वो डिमांड हो सकता है किसी भी। नहीं आस्था, this is the different thing. You are talking about the jobs that are being assigned to the employees. ठीक है? If you are assigning the jobs to the employees, you must have the availability of employees as well. Without not availability, ma'am, I'm not position their manager. Okay, I'll explain it to you. See, whatever you are saying, when we talk about the demand and supply of in HRM especially, we are talking about HRM, human resource. ठीक है? Yes ma'am. You know, one of the major function of HRM is HRP, human resource planning. What is human resource planning? We are planning for human resource. अब जब आप प्लान कर रहे हो तो उसमें आप क्या करते हो? You look into the organization that whether there is requirement of further employees or not in your organization. In every department, it's not like that you are just searching for the requisition in HR department only.
Yes, ma'am. Okay, you can ask for if any other department wants any kind of employees for their department as well. Okay, so that is basically demand. Any department is looking for 2 or 3 or 4 candidates, so they are demanding that much candidates. Okay, they want that. Now, when we start the recruitment process, when we try to select the employees to the organization, accordingly, whatever vacant positions you have, you are trying to supply the human resource to that particular department. ठीक है, तो यहाँ हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स की नहीं, ह्यूमन रिसोर्स के डिमांड और सप्लाई की बात करें। जितनी जरूरत है हमें उतना ही चाहिए। अगर आपको 2 जरूरत है, आप 4 लेके आ रहे हो, तो फिर दैट इज अननेसेसरी बर्डन ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू नीड टू पे मोर टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो अगर हमें 2 की जरूरत है तो हम 2 ही हायर करेंगे। This is bridging the gap between demand and supply. There must be hierarchical level. Yes, हाँ, hiring का hierarchical level ना, नहीं, हायरकी लेवल तो ठीक है, वो तो लेवल वाइज हो गया ना। मान लो आपको मैनेजर पोजीशन के लिए 2 लोग चाहिए, आपको उससे नीचे वाली पोजीशन के लिए 4 लोग चाहिए। ठीक है, तो हायरकी वाइज if you are creating positions for your employees in the organization, and accordingly again the recruitment process will start and you will hire as much number of employees you required in your organization. ठीक है, क्लियर है? yes ma'am, yes ठीक है ना? कहने का मतलब है कि बैलेंस होना चाहिए, कितना आपको एम्प्लॉय चाहिए, आपको चाहिए और उतना ही आएगा, जरूरत से ज्यादा यू नीड नॉट हायर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, next one you can see recruitment and training. If you are recruiting employees for your organization, proper training need to be provided, and again this is the challenge for HR manager. You can see, as in our previous point we have discussed that there is you need to focus on maintaining the balance between demand and supply. Accordingly you need to hire the employees in your organization. ठीक है, the next one is trust factor. Yes, it's very difficult for an HR manager to develop a kind of trust factor in your just a minute, hold on. Okay, so this is a kind of trust factor that an HR manager has to build with his employees. ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट लेवल जितना ज्यादा आपका एम्प्लॉइज के साथ अच्छा होगा, उतना एम्प्लॉइज आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे. इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ ग्रीवांसेस, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, देन दे विल contact you with any with no fear, you can say. Okay, easily they can contact you when and wherever it is required. So this is one of the major way to maintain a good relationship within any industry. Clear hai? Now next point is work life balance factor. Work और life के बीच के balance को maintain करना, this is one of the major challenge for HR manager. Not only for HR manager but the employees in the organization as well. जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं your personal life suffers. ठीक है, अगर आप पर्सनल लाइफ को ज्यादा टाइम देते हो तो योर प्रोफेशनल लाइफ सफर्स. ऐसा होता है? Yes, ma'am. So this is one of the major challenge for all of us, how you can maintain a balance between your personal life as well as professional life. क्योंकि जब तक आप इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तब तक it really becomes difficult to focus on your work as well as on your personal life. Okay, so somewhere HR also plays an important role in balancing the work life of their employees. ठीक है? Yeah, other than that, you can also say that if you talk about work-life balance factor, at your professional level also, HR manager needs to create a kind of motivation level, you can say, to the employees, so that they are in the position to give their 100% to the organization. आपके वर्क लाइफ में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं एचआर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. द लास्ट वन इज द रिटेंशन ऑफ द टैलेंट पूल. ओनली रिक्रूटमेंट इज नॉट सफिशिएंट. इफ यू आर हायरिंग somebody
and that particular employee is joining your organization, and within 2 to 3 months she is leaving your organization. So somewhere it creates a negative kind of impact, ठीक है, on your organization. ऐसा होता है ना, इसीलिए there is some kind of loophole in your organization. That's why employees are not retaining in your organization. So what a manager need to do? The manager need to point out all those things, and for this purpose only exit interviews are being conducted. Exit interviews वो क्या होता है, आप जब कहीं जॉब छोड़ के जाते हो तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, why you are leaving the organization, if you have any kind of problem, just you can share your views, your opinions, and through that survey or through your opinions, and जो और भी employees अपना opinion देते हैं, through that you can come to a conclusion whether there is a loophole in your organization or not. If there is, then you need to sort out the problems so that retention, you can retain the employee in your organization. Okay? Retention मतलब समझते हो ना, to retain, रोकना, रोक के रखना. Okay? तो सिर्फ रिक्रूटमेंट काफी नहीं है, रिक्रूट करके उनको रिटेन करके रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक, इफ यू वांट समथिंग गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so this is the end of our this introduction of HRM 1 part 1. This is part 1. Next we will talk about the functions of HRM in our next session. Okay. If you have any problem, just go. I have shared the slides with you. I have shared the slides with you. You can just go through the slides. If you have any problem, just raise the question. In the meanwhile, I'll share you the feedback link. Sorry, attendance link to you. Just ठीक है? हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? Yes, ma'am. What is the meaning of adding to grievances, ma'am? In the previous slide. हाँ, 1 minute. Yes, I'm adding to grievances. Ma'am, what is the meaning of grievances? You haven't attended the first session? Okay, I'll tell you. Don't mark your attendance here. I have shared you a link, attendance link. Please mark your attendance through this link. It will be active only for 5 minutes. At 2:20, it will be deactivated. So first, go through the link and mention mark your attendance there. Yes, who was asking grievance? Grievance basically what is that? Huh? Attendance link. Attendance link मैंने शेयर किया है अभी चैट बॉक्स में, देखो. You can see your chat box. पर डे मैम ऐसे ही होगा ना? Yes, per day ऐसे ही होगा आपसे. So उसी के थ्रू मार्क करो. Okay. Okay. Grievance की बात हम करें. Grievance is basically a kind of complaint or query that you have related to your employment. ठीक है? किसी भी तरह का कंप्लेन या क्वेरी है आपको आपकी वर्किंग, आपके काम से रिलेटेड, देन बेसिकली दैट इज टर्म्ड एज ग्रीवांस. ठीक है? इनिशियल स्टेज में ग्रीवांस जो होता है वो कंप्लेन ही होता है. ठीक है ना? मैम खुल नहीं रहा है लिंक. नहीं खुल रहा है मैम, लिंक खुल रहा है. भी गया मैम, बन भी गया. वेरी लिंक सेंड कर दीजिएगा. फिर से सप्लाई मैम एग्जांपल में किस सेक्टर हो सकता है जहाँ पे हम लोग मैम करते हैं, जैसे कि गार्ड हो गए मैम, अलग अलग कंपनी में पर्सन हो गए मैम. मुझे आवाज नहीं आ रही है जिसने भी पूछा. हेलो. once more repeat your answer question. सर्विस सेक्टर एग्जांपल हो सकता है क्या मैम, डिमांड एंड सप्लाई का जो आप बता रहे थे? ठीक, बाकी सेक्टर्स का नहीं. डिमांड एंड सप्लाई को जब हम एचआरएम में बात करते हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है? हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है. वी आर डिमांडिंग 5 एम्प्लॉइज फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी नीड दैट मच. उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. ठीक है? तो मैम यस मैम. हाँ बोलो.
वही मैं बोल रहा मैम लिंक हम या तो हम लोग लिंक कैसे नहीं खुल रहा है? लिंक तो खुल ही रहा है बाकी लोगों का। एक बार फिर से ट्राई करो। अच्छा, जिसका भी नहीं खुल रहा है एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, आई सी टू इट। ओके मैम। ठीक है, लेकिन लिंक में तो उसमें डाल दो, ज्यादा अच्छा है। नहीं खुल रहा है, कुछ लोगों का खुल रहा है। थोड़ा वेट करने पे ओपन प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं खुल रहा है मैम। खुल रहा है मैम, वेट करने पे खुल जा रहा है मैम, टाइम लग रहा है बट खुल जा रहा है। किस्मत का बात है। वही बात है कि